Hello everyone, welcome to Maneuver Talk with Toppers. So today we have Yashwardhan Singh from Rajasthan. So in this podcast, we will try to explore everything related to the preparations about the exam difficulty level. So those who are watching this podcast, so just watch till the end. And if you have any specific question for the next round, for the any other stopper, so you can mention in comments. So first of all, welcome Yashwardhan in this podcast session. Thank you, sir. Thank you, sir. It's an honor. So, Yashwardhan, first we want to know about your educational background and you belong to, it means where you are from. And next and very important question, why you want to do law? Okay, so sir, first of all, after 10th, I picked PCM, Physics, Chemistry, Maths, and Okay. I was a defense aspirant. I Mhm. prepared ND for 2 years, but sir, it Mhm. worked out for me that well. Mhm. When I finished my 12th, sir, I was wondering that what should I do next. Mhm. I got to know it this from one of my friend who himself was preparing for CLAT. Okay. To know about this about entire this law field and all because before this I wasn't aware. Mhm. So from him I came to know about this and I start preparing for CLAT. I didn't know what MHCET was, and I Mhm. to be honest, the CLAT examination on December and it doesn't went well. And when it Okay. long, I thought it's all over now. There is no chance, nothing. Mhm. But obviously, with the time I researched and I found new colleges and came to know about GLC Bombay, which is obviously everyone Mhm. everyone aims there to get. And so I start preparing for GLC Bombay, and that's how my love for law started. And yeah, that's how I started in different cases and all. And yeah, I got interest in this subject. Okay. So basically, when you started the preparation for this MSCET 5 year, I started in January. you started in January, and before that you were preparing for the CLAT. Yes, yes. सो क्लैट के लिए कितना टाइम डिवोट किया था, मतलब वो पूरा ओवरऑल प्रिपरेशंस फॉर द लॉ एंट्रेंस के लिए कब से स्टार्ट किया आपने? So I think I started in last year September. लास्ट ईयर सितंबर से बेसिकली यू स्टार्टेड एंड टारगेटिंग द क्लैट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट फॉर द एमएससीईटी. तो एमएससीईटी के बारे में कहाँ से पता चला? MSCT, sir, through YouTube, I would say YouTube. एंड हाउ यू कम टू नो अबाउट द मैनुअर? Sir, I came to know this from the same friend who got me in the law field. ओके. He suggested this. He is from here only. ओके. तो हाउ इट वाज हेल्पफुल जो मैन्यूवर के पोस्ट एंड मैन्यूवर के नोटिफिकेशंस एंड स्टडी मटेरियल व्हाटएवर यूट्यूब पे जो एक्सेस है फॉर द पीपल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हाउ इट्स हेल्पफुल एज पर यू? Sir, I think it is very exam oriented, I would say. The, हम्म. the content which I got, because they were direct questions. In reasoning, they were like not even some digit change or some name change. They literally, Some, as it is question, there was some questions in reasoning section. Yes. like you need not even calculate because I remember those answers. I hit it itself. You don't need to observe the option also, right? Yes, yes. I think 3 or 4 question was there directly from our content, which we basically used to explain in our class and live lecture. Yes, sir, there were five. I would say five as a I remember. Five questions. Directly that question was there. Yes, sir. So it is very exam oriented, I would say, sir. Okay, now coming to the next question. So when you saw your results, so what was your expectation and as per you, and how was your score basically? Sir, I still don't know because I gave my exam. I didn't check my score nowhere. I just came to know when the percentile was released and it was 98 percentile. So I still don't know whether that's good or how which one I'm gonna get or I don't know. So I would say it was mixed reaction that is it enough or I should have got more or this and that. I don't know, sir. I'm So still I think sir, before 2-3 months before, if you started, मतलब थोड़ा सा और पहले start कर लेते तो और I think 99 and 100 percentile भी हो जाता. yes, sir. I do believe this. If I do, so I think what mistake I made was I diversified my content. I started doing which diversified, which made my life, I would say, more miserable. If I would have stick to one thing, then it would have been more risky, and I think I would have scored more. So instead of the right material as per the exam level, so basically,
काफी अदर कंटेंट में फॉलो करने में टाइम वेस्ट हो गया, और वही टाइम अगर सिर्फ यू कैन यूज फॉर द पर्टिकुलर राइट कंटेंट तो इजिली आप काफी अच्छे से सिलेबस कवर कर लेते। Yes, sir. Definitely, sir. Definitely. सो हियर वन क्वेश्चन रेस की जो स्टूडेंट बेसिकली सेल्फ स्टडी करते हैं एंड कुछ स्टूडेंट जो क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशंस करते हैं, तो एज पर यू व्हाट यू कैन सजेस्ट टू देम इन केस ऑफ, बिकॉज सेल्फ स्टडी में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या बेनिफिट होता है, या फिर क्लासेस ज्वाइन करने में क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इफ यू कैन एलोबरेट एंड एक्सप्लेन एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू। Sir, in my experience, I would say there is a benefit in joining classes. हम्म Like for example, the exam of CLAT or even MHCET, the syllabus हम्म, is very like it is not something fixed. So राइट, if you go to some classes or some coaching, you can get the overall idea that what the syllabus actually is, and you can study in one direction. करेक्ट करेक्ट। Yourself, you 3 months you keep wondering that what even the syllabus is. ये प्रॉब्लम होता है। It is more difficult. I would say that was the mistake I think I made in CLAT as well. राइट राइट। Self study only. सो बेसिकली जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेस करते हैं सेल्फ स्टडी में, बिकॉज दे डोंट हैव द राइट कंटेंट, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सिलेबस एंड राइट गाइडेंस नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो Yeah, very if much, very much. if the some students, yeah, if those who want to get a good score and want to convert the top law colleges and will use for the CLAT, otherwise for the law city के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशंस लेना है तो डेफिनेटली गुड स्कोर का नीड होती है, एंड फॉर दैट यू नीड अ डेडिकेटेड कंसिस्टेंस एंड राइट मटेरियल होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज अबाउट द सेक्शन। सो देयर इज अ 5 सेक्शन: इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, लीगल and GK. So which section was your strong, and you are weak in which section, if and what was your strategy for the preparation for the different section? क्या स्ट्रैटेजी था, किस बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, कैसे आप उसको प्रिपरेशंस करते थे जो, सो इफ यू कैन एक्सप्लेन। So I think I was strongest in English, and हम्म I would say maths as well. It was not that difficult. I think it's simple mathematics in this examination. The strategy was, I think, required in first of all in reasoning because that was new subject for me, ओके। and second was in GK, static GK and current GK, and I think that is everyone struggles there. I use, हम्म I dedicate most of my time in those two subjects only. And हम्म for me, I think after purchasing the courses were really simple because there were classes given, so you can calculate according to the days, number of days left. You can राइट। take classes, then you can just solve the books. I had ordered some books as well to solve. And I would do one thing that I would study every subject every day. Like I have decided my timetable, and I used to give like 2 hours to reasoning, 2 hours to GK, and all subject 1 hour daily. I have done that. Like I have never missed a subject on one particular day. राइट, मतलब एवरी डे ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, बेसिकली पर डे बेसिस गोल, जस्ट ट्राई टू फिक्स द पर डे बेसिस गोल एंड ट्राई Yeah, टू कंप्लीट इट। yeah. I used to have weekly goals and then per day goal. That's how I used to go. बहुत बहुत अच्छी हैबिट है, एंड इट विल ऑल्सो गिव यू द वेरी पॉजिटिव थिंग्स एज वेल एज यू विल बी मोटिवेट फ्रॉम दिस थिंग इफ यू विल कंप्लीट योर गोल। अदरवाइज जब चीजें कंप्लीट नहीं होती ना तो बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है कि नहीं हो रहा है, शायद से मैं कैपेबल नहीं हूँ, शायद से मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट गाइज, इफ यू आर टारगेटिंग एनी बिग एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वॉट एवर जो भी वॉट एवर इफ यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, सो एक बार में बड़ा ही मत सोच लो, बड़ा सोचो बट ट्राई टू उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लो एंड ट्राई टू अचीव दैट स्टेप बाय स्टेप गोल। छोटी छोटी चीजों को अचीव करते रहेंगे तो डेफिनेटली बिग चीजें अचीव कर लेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जाम्स एंड फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो, मॉक टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट आपने अपीयर किए थे? So mock test, I think I started giving them in January itself, and to be honest, I have given I think 20-25 mocks, I would say. 20-25 mocks, okay. But I would say I have given all mocks for maneuver, and I have never scored above 100 in any of the mock. So I don't know, but नो it नो, went. इट्स फाइन बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आता है कि 100 से ऊपर नहीं जाता है। मैं उनको अश्योर करता हूँ इफ यू आर गेटिंग 100 इन मैनुअर मॉक, सो डेफिनेटली इन एक्चुअल मॉक यू विल गेट 115, 110, 120, आराम से इतना गेन करोगे।
Yes, sir. Definitely, sir. That's true. That's like first-hand experience here. सो फ्रॉम फर्स्ट मॉक में कितना आया था, कितने मार्क्स आए थे, और लास्ट मॉक तक कितना प्रोग्रेस किया था आपने? Sir, first mock as of I remember, I think I was around 72. यही एवरेज होता है सबका, 60 to 80 के बीच में रहते हैं। Yes, I would say 72, and it went, I think 104 was my highest. हंड्रेड That, एंड फोर that was in the month of April. So I thought I हम्म will get 120. I will start get 120 in the month of May. Didn't happen. In mock it, the score kept getting low. ओके ओके, एनी स्ट्रैटेजी टू अपीयर द मॉक टेस्ट? इट मींस कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करते थे, रीजनिंग को, इंग्लिश को या फिर लीगल को? तो ऐसा कोई आपने सीक्वेंस बनाया था कि कौन से सेक्शन को पहले रखना है, बाद में रखना है, ऐसा कुछ? I would attempt those subjects like GK. I used to attempt then English, ओके। and then I would go for reasoning, maths, and then हम्म। legal part. ओके, And yeah, that's मतलब it. फर्स्ट वन वाज जीके, जो कि सबसे इजी होता है, विद इन द 5 to 7 मिनट आप कंप्लीट कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट इंग्लिश। एंड इंग्लिश इज ऑल्सो अबाउट द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग है तो हो जाएगा, उसमें कोई कैलकुलेशन तो करना नहीं है। देन आप रीजनिंग और लीगल को रख सकते हो। ओके, एनी सजेशन फॉर द एस्पिरेंट जो कि स्पेसिफिकली लोगों का लीगल और इंग्लिश को लेके काफी डाउट होता है, मतलब ये होता है कि कैसे प्रिपरेशन करे और एग्जाम में विद इन दिस 2 आवर्स कैसे पूरा कंप्लीट करे? एक रीडिंग का प्रॉब्लम होता है, रीडिंग है भी, बिकॉज लीगल में भी रीडिंग है, इंग्लिश में भी रीडिंग है। सो एनी सजेशन फ्रॉम योर एंड फॉर द हाउ टू इम्प्रूव द रीडिंग एंड पूरे के पूरे क्वेश्चन को कवर करना इसी 120 आवर में? So I think it is not that difficult in this exam because I think I finished my exam in 1 hour itself. And because I think I was preparing for CLAT, so my reading was fine in English. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ना। Yeah. So what I used to do during my CLAT preparation was I used to set my timer for like 5 minutes, and I used to paragraph and solve the questions. I tried to like I made it my habit to solve every question, every paragraph, no matter how big or small, to give exact 5 minutes. I think this was the exercise I used to do the most during my CLAT preparation. I think that is what has helped me in MHCET as well. And yeah, and for reasoning, I would say just practice. Just how many questions, प्रैक्टिस because that is how it is. प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, सो इट्स इम्पोर्टेंट भी है। और रीडिंग के लिए इफ ऑन डेली बेसिस, जैसे आपने बताया टाइम बाउंड के साथ अगर समवन विल स्टार्ट, सो डेफिनेटली काफी इंप्रूवमेंट मिलता है। क्लैट तो पूरा रीडिंग बेस ही है, बट एमएच लॉ सीईटी में उतना रीडिंग नहीं है, बट इफ समवन कैन रीड बेटर, अंडरस्टैंड बेटर इन शार्पली एंड क्विकली, सो डेफिनेटली एग्जाम अपीयर करना काफी इजी हो जाता है। Yes, sir. Okay, okay. And one more questions related to exam center. So as you said कि you are OMS student out of Maharashtra, तो कहाँ पे सेंटर था बेसिकली आपका? सर जयपुर में था, इन जयपुर। जयपुर में था। ओके, एंड व्हाट वाज योर एग्जाम्स एक्सपीरियंस? इट मींस जिस दिन एग्जाम था थोड़ा सा पैनिक होते हैं लोग, नर्वस होते हैं, फिर एग्जाम हॉल तक कुछ 5-10 मिनट तक नर्वस होते हैं, और फिर जो जिनका कॉन्फिडेंस बेटर होता है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जिनका नहीं होता फिर तो फिर सब गड़बड़ सड़बड़ करके आते हैं। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑन एक्चुअल डे? Sir, I think in my center nobody was nervous because it was so hot that day. I think it was, and sir, I think sweating, and that exam center it was not properly air cooled and something. So ओह। it was very difficult, sir. So no one was thinking, even I was not thinking about the exam. We all were sweating there, and as soon as the exam started, I think I forgot everything. Like, wow, yeah, I कुछ नहीं, I तो in the paper, and I was confident because I have given mocks, so I had no problem in that. बट एग्जाम सेंटर तो मोस्टली कंप्यूटर लैब ही होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो एसी तो होता ही है मोस्टली। नहीं सर, वहाँ वहाँ नहीं था। वहाँ एसी नहीं था? नहीं था सर। तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा सारे लोगों को। बहुत प्रॉब्लम था सर सब। अनकंफर्टेबल में फिर वो मेंटल, जो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ, जिस एफिशिएंसी के साथ काम करता है, फिर अगर ऐसा क्लाइमेट या फिर ऐसा सिचुएशन बन जाए तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। सर काफी काफी प्रॉब्लम था सर, क्योंकि सेंटर था वो भी जयपुर के बाहर था, और मैं हम्म से नहीं हूँ, तो मेरे को वहां जाना पड़ा। फिर मैं पैदल चला बहुत देर वहां पहुंचने के लिए भी। एग्जाम सेंटर स्टिल इट वाज, आई डोंट नो व्हाट वर द रूल्स देयर। आई मीन दे हैड देयर ऑन देयर रूल्स। You हम्म can't bring the pen in. They were not giving the pen till the last moment. We all are wondering. I was just saying, just give me the pen. Rest all I don't care. Just give me the pen. पेन?
Yeah, they didn't allow in pen in the in classrooms. They say keep it out. We'll give you, which they were not providing right till the end. Oh my God. So unnecessary. This is a wastage of the time. Yeah, very much. I would say very much. So student, those who are watching this podcast, if you are out of Maharashtra, basically, I have experience about the Mumbai region के जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, थाने है, पालघर है और पुणे है, यहाँ पे तो काफी अच्छा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. बट इफ यू आर आउट ऑफ, तो आप थोड़ा सा सेंटर पे ये सब चीजों का केयर कर लेना अगर से जो भी नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वालों, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें अननेसेसरी इम्पैक्ट करती हैं विच इज कैन इम्पैक्ट ऑन योर स्कोर, क्योंकि पेन नहीं मिला, रफ सीट नहीं मिला, और डिवाइसेस जो आप माउस कीबोर्ड यूज, बेसिकली माउस ही यूज करते हो, तो बिफोर स्टार्ट योर एग्जाम सो यू कैन चेक योर माउस इट्स प्रॉपरली मूविंग और नॉट. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट इट्स इंपॉर्टेंट. 3 computers were not working there. The students were sitting. Now they were changing seats. So everything. अननेसेसरी पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, एम खराब हो जाता है. Okay, now coming to the last question. Any suggestion from your end which you can give to the new aspirant, so they, if they will follow, so definitely they will good score. So I think it is one thing is just follow the right pattern, just follow the right syllabus. I think that is the most important thing. And I think studying every day continuously, I would say, will be more helpful rather than studying 10 hours a day and then not studying at all the next day. Yeah, I would say consistency and Consistency. right pattern. And so I would definitely suggest maneuver to anyone who gives this exam, because this is so exam oriented. This is so exam oriented. Like it does the 50% of for you. Just you need just to cover the syllabus which is given there. करेक्ट. सो जस्ट यू हैव टू गिव योर एफर्ट एंड जितना हम गाइड कर रहे हैं उतना अगर कोई फॉलो कर ले तो डेफिनेटली सिर्फ पास नहीं करेगा, वो टॉप करेगा आराम से. इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट अपने एंड से एफर्ट थोड़ा सा कम देते हैं. नहीं तो जो सिलेबस एंड जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं कि मतलब इट्स ऑल स्टूडेंट, अगर जो भी मैनुअर में अगर सब अच्छे से एफर्ट दे दे तो वो टॉप लिस्ट में ही रहेगा. हाँ सर, बिल्कुल. Because last 7 years से continue I am appearing this exam to understand the pattern, difficulty level, type of the question. So पूरा एकदम पता चल गया है कि कहाँ पे कितने क्वेश्चन देंगे, कि डायरेक्शन देंगे तो रैंकिंग नहीं देंगे, रैंकिंग देंगे तो ब्लड रिलेशन नहीं देंगे. पूरा पेपर का पैटर्न पूरा एकदम बाई हार्ट है. So now thanks Yashwardhan to come here to share your point of view with our students, our जो new aspirants है. So one last questions. What reform you want in law field, basically as per your point of view, if you can mention any 1 or 2 point. So I think the system of conducting exams, I would say, in CLAT as well and here as well, both. Even in the CLAT, the answer keys which was released, and there were all sort of, like, I would say, confusion. And सर विश्वास होता नहीं कि सर इतना मेहनत किया और ये आंसर्स वो चेंज हो गया, ये 2 क्वेश्चन, ये इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है. आई थिंक सर इट ब्रेक्स हार्ट, लाइक व्हाट इज दिस, देयर इज नो even one particular system to follow. Chalo, okay, great. And once again, thank you, and to come here to share your experience, and wish you all the best for your future. Thank you, sir. Thank you.